Hello everyone, welcome back to my channel Political Science YT. So today we will be starting with the topic comparative politics. In previous video we have talked about comparative government, its features, the scope and its limitation. Today in this video we will be starting with comparative politics. All those who have not watched the video of part 1, I will paste that link in the description box. Kindly visit to that बिकॉज हमें बेस बनाना होता है तो पार्ट 1 हम आप सब पहले देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टडिंग व्हाट इज़ द मीनिंग. दैट मीन्स कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है. पहले मीनिंग लिखना है, फिर उसके सपोर्टर्स के बारे में लिखेंगे, फिर 2 डेफिनेशंस बताएंगे, देन फीचर्स, देन नेचर, स्कोप. ये सारी चीज़ें कवर करके वी विल बी डन विद आवर लॉन्ग आंसर एज वेल एज आवर टॉपिक 2. सो लेट्स स्टार्ट. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है इसकी ये पहले तो हम एक बात क्लियर करते हैं. ये एक मॉडर्न ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की. जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी वो ट्रेडिशनल ब्रांच थी पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मॉडर्न ब्रांच है. और इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था ग्राहम विलेस एंड अर्थर बेंटले ने in their books Human Nature in Politics and the Process of Government respectively. You can always mention that to put an impression on the examiner that you are clear with your concept. Then you can write about the thinkers who supported the concept of comparative politics like Robert Dehel, Edwin Schills, Lucien Bai, Sidney Verba, David Easton and many others. They are the supporters of comparative politics. सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है. एज हमने पढ़ा था कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट होती है वो फॉर्मल स्टडी होती है, लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है इट इज़ बेसिकली द इनफॉर्मल स्टडी. इट फोकसेस इन द एक्चुअलिटीज़, बिहेवियरल स्टडी है बेसिकली. तो इट इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स ईदर इन होल और पार्ट which analyze the similarities and differences between the political units in different countries. और ये कंपैरिजन है विच बेसिकली स्टडीज़ अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस and the processes of government in a comprehensive manner. And one question I want to ask you guys, do write in the comment box that who was Lucien Pai? There is a concept in political theory you all have studied in semester-1 BA. There is a concept given by Lucien Pai. You all have to write down the concept's name in the comment box. And also about Sidney Verba and David Easton. They've also talked about the concept in political theory. So you have to mention that in comment box. Then after explaining the meaning, we will be writing 2 definitions. These 2 definitions are smaller also and they are conveying the full meaning of the concept too. Like according to Michael Curtis, comparative politics is concerned with significant regularities, similarities and differences in the working of political institutions and in political behavior. According to Edward Freeman, comparative politics एक कंपेरेटिव एनालिसिस होती है अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. उसके बाद हम आते हैं फीचर्स क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के. सो दिस फ्लो चार्ट यू कैन मेक दैट स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़. ऑल द पॉइंट्स यू कैन जॉट देम इन दिस फॉर्म. वैल्यू फ्री स्टडी है. इट डजंट फोकसेस ऑन द वैल्यूज़. इट इज़ कंसर्न मोर विद द एक्चुअलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रियलिटीज़. और एज वी स्टडीड की ये स्टडी होती है ऑफ द नॉन स्टेट फैक्टर्स और द नॉन इनफॉर्मल फैक्टर्स विच बेसिकली इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिस्टम. ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है. एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल स्टडी होती है. एनालिटिकल रैशनल स्टडी होती है बेसिकली एज इट फोकसेस ऑन द रियलिटीज़, रियल वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर फोकस करती है. सो इट इज़ बेसिकली एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल स्टडी. उसके बाद स्टडी ऑफ इनफॉर्मल एक्टर्स. यहाँ पे इनफॉर्मल एक्टर्स का मतलब है कास्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को. उसके बाद है स्टडी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटीज़. यहाँ पे डेवलपिंग सोसाइटीज़ का मतलब होता है कंट्रीज़ ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका.
सो कंपेरेटिव गव पॉलिटिक्स है वो स्टडी करते हैं अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज़ और लाइक ऐसे नहीं कि कम्प्लीटली डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ही फोकस है एंड निगलेक्ट कर दिया डेवलप्ड कंट्रीज़ को. इट बैलेंसेस बोथ द थिंग्स. इट इज़ बोथ अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल कंपैरिजन. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि इट कंपेयर्स द डेवलप्ड कंट्रीज़ और वर्टिकल का मतलब हुआ है कंपेयर डेवलप्ड विद इन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, राइट. देन स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है. As it focuses on the actualities, it basically analyzes the actual political behavior. और इंफ्रास्ट्रक्चर किसका देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ का, प्रेशर ग्रुप्स का एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स का. इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है बिकॉज कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज not only talks about political science, it has also the it has also taken the help of other subjects like sociology, economics, anthropology, so psychology. एज वी नो कि मैन एक कॉम्प्लेक्स बीइंग है एंड उसको सिर्फ एक ही आस्पेक्ट ऑफ लाइफ में समझना दैट इज़ पॉलिटिकल इज़ नॉट कूल. सो डिफरेंट आस्पेक्ट्स में उन्हें समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की स्टडी होना ज़रूरी है. सो दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी. देन इट इज़ बेसिकली साइंटिफिक थियरी. अगर एम्पेरिकल और एनालिटिकल थियरी है स्टडी है तो साइंटिफिक तो होगी ही बिकॉज इट focuses on developing the concepts, theories जो कि साइंटिफिक बेसिस पे हों और ये एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है रादर देन बीइंग सब्जेक्टिव. न्यू टर्मिनोलॉजीज ऐड करते हैं लाइक दैट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल एलिट्स. देन कम्स डायनामिक सब्जेक्ट है. चेंजेस विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड टाइम. इट इज़ अ मॉडर्न एंड अ डायनामिक चेंज. एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कि जैसे कोलैप्स हुआ था सोवियत यूनियन का, इट बेसिकली लेड टू चेंजिंग ऑफ द इंटायर वर्ल्ड ऑर्डर फ्रॉम बाइपोलर इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर टू यूनिपोलर international power structure with America as a dominant power. Quest of theory building. It basically focuses on building the theory like whatever may be the form of democracy. It is the rich who control the power. एक theory देते हैं. Then this is basically about the features or you can say the nature. Then the scope of comparative politics. It is basically the study of political activities. जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हो रही हैं उनके प्रॉज एंड कॉन्स और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं वर्किंग को. तो ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. देन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स कि कैसे सारी एक्टिविटीज़ जो इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स. स्टडी ऑफ ग्रुप्स हैं. Like there are many occasions when individuals they come together and form the groups for the fulfillment of their needs, but at some times individual they cannot fulfill their needs alone, so formation of the groups help them in increasing the influence and the power. So in this way they play an important role in study of the groups. Then study of political socialization में हेल्प करते हैं लाइक इट इज़ एज वी नो कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलिटिकल कल्चर होता है जो एक पॉलिटिकल सिस्टम का. इट इज़ बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. तो इसमें हेल्प करते हैं. उसके बाद है स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर. वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पॉलिटिकल कल्चर पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है और किसने परफॉर्म किया था. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर अदर कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल. पॉलिटिकल कल्चर के टर्म दिया था गैब्रियल एडमिन एंड ल्यूसन पाइन. देन पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ द एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड इमोशंस दैट आर बेसिकली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज टू पॉलिटिकल इशूज़. उसके बाद पॉलिटिकल एलिट्स के बारे में स्टडी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और सोशल वर्क में. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस. As politics, it does not only study the decision but also whole process of decision making, whether it is formal or informal. सो ये स्टडी करता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस को और फीडबैक देता है गवर्नमेंट को थ्रू डिफरेंट सोर्सेज दैट वेदर द डिसीजंस मेड
by any political system are for their benefit or not. Then study of the problem of modernization and urbanization, कि कैसे urbanization modernization impact कर रही है and it is contributing towards industrial economy and all the effects and negative effects and positive effects it studies. Then study of political system, concept given by David Easton, again important for some entrance exam or UGC net. Then, as mentioned above, comparative government, it has basically introduced new terminologies like political system in place of state. जो political system होता है एक wider concept है and comprehensive concept है जो include करता है formal as well as informal structures. Study of people's participation, that whether people are participating in the different forms of government, like be it democracy, like what is the level of people's participation, that it study. Comparative politics studies all these things. Study of power, authority and legitimacy, as power is basically central to politics, so maximization of power इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. वो स्टडी करते हैं दैट पावर किसके पास है, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, दैट वेदर दे आर राइट इन द राइट हैंड और नॉट. स्टडी ऑफ मेनी वाइज, कि ऐसा मतलब इट बेसिकली ऑफर द सोल्यूशंस to the problems encountered. Also, to it also answers the various paradoxes. For example, that with the spread of education and awareness, the role of caste, religion, and language, it would decrease. Then study of the political ideologies. Political ideologies, they are the basis of any government or any state. So जो ये ideologies होती हैं, they are studied so that the nature of the country and its working can be understood well. Then study of the role of bureaucracy. Bureaucracy हमें पता है कि permanent executive होते हैं, so they actually frame the policies and are trained for job. So ये basically study करते हैं कि bureaucracy का role क्या है in forming the various policies and programs. Comparative study of the different structure. कंपेयर का मतलब होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करना ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. सो इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द कंपेरेटिव स्टडी. इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. उसके बाद ये डिफरेंस है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का. समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आज दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स. सो इसमें हम पहले तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय हेडिंग, एंड देन एट एंड वी कैन ड्रॉ a table like the basis of distinction in one column, then in other column comparative government, then in the third column comparative politics. Basis of distinction basically means on what basis we are distinguishing between them, and in short we can write in that table. It will also put a good impression on the examiner, and also it will help in the good presentation of your paper. So comparative government is older subject, और जो comparative politics है वो new subject है, as we talked कि modern branch और traditional branch, which we have already talked about. Then comparative government norms के ऊपर based होता है because it focuses on the actual on the traditional values, और comparative पॉलिटिक्स इम्पेरिकल है, रैशनल है, एनालिटिकल है. कंपेरेटिव गवर्नमेंट स्ट्रेस करते हैं वैल्यूज़ के एज इट इज़ अ नॉर्मेटिव आस्पेक्ट. ट्रेडिशनल ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की. कंपेरेटिव पॉलिटिक्स वैल्यू फ्री स्टडी है, एनालिटिकल है, एम्पेरिकल है. कंपेरेटिव गवर्नमेंट डिस्क्रिप्टिव बाय नेचर होती है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स साइंटिफिक होती है. कंपेरेटिव गवर्नमेंट एक्सप्लेनेटरी होती है, एंड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एनालिटिकल होती है, बेस्ड ऑन द rationalities and all the things. They are based on the rational thing, and also there are unbiased conclusion drawn. Comparative government basically ignores the infrastructure. Herein infrastructure basically talks about the pressure groups based on the caste, religion and language. Comparative government ignore करता है, लेकिन comparative politics due regard देता है infrastructure को, as we talked कि जो फॉर इनफॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं, इनफॉर्मल स्टडी होती है, इट बेसिकली कंप्राइज ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, दीज ऑल थिंग्स.
देन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यूजफुल होती है एज़ कम्पेयर टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट बिकॉज मॉडर्न है, डायनामिक है, चेंजेस विद द पासिंग टाइम, सो इट इज़ या मोर यूजफुल. देन कम्स कंपेरेटिव गवर्नमेंट इज़ नैरोअर. एज ट्रेडिशनल है तो नैरो तो होगी ही, मॉडर्न है तो इट विल बी डायनामिक एंड वाइडर स्कोप होगी उसकी. पर्पस होता है जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का, वो कंपेयर करना होता है टू डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड टू reduce the conclusions. Exactly. Then comparative government is closed in a tight compartment, while comparative politics believes in interdisciplinary approach. This is by name clear only. Then utility कि क्या यूजेज़, you can say merits or advantages. Comparative politics study करता है developing countries को without ignoring the fact that without ignoring the developed countries as well. This flow chart you can make. Interdisciplinary study as a boon, as the students of this science, they get the knowledge of all the subjects as interdisciplinary, helpful in generalization. Generalization basically means abstraction. Analytical and empirical study है, so generalizations में help करता है. Comprehensive study, it has a wide scope and it is a complete study in itself. Scientific and empirical study है. Comparative politics helps to offer the solutions to various problems which are encountered in the working of the political systems. Helpful in the revision of legitimacy of the current theories. Legitimate होना चाहिए, authenticity के ऊपर based होना चाहिए किसी भी current theory को, and descriptive model पे based होना चाहिए. Value free study है, as it does not let the moral values interfere with the research. For example, if an interview method is used, the researcher has to report whether the interviewer has responded, whether the researcher likes it or not. Then comes the limitations. Problem of finding facts, as comparative politics basically deals with human beings and not with assets and bases, so there is a problem of finding facts. Then there is a difficulty to study all the political system and they cannot be compared. There are complicated issues in it. Then man is a focus of study. In comparative politics, man is a focus of study, but as we know that man is fickle by nature and he keeps on changing, so it would be very difficult to base any theory permanently on the man. Its scope is too wide. Lack of a common terminology, as new terminology keeps on adding, like political system, political culture, political socialization, and also there is a gap between theory and actual reality. It is not universally acceptable. So yeah, that's it for this video. If you like the content, don't forget to hit that like button. Thank you so much for turning in. Thank you so much for your time.